Everyone, am I audible? Am I audible? Am I audible? Good morning. Yes, ma'am. Okay. So, in the last class, we have discussed about the new Gauss forward and the backward formula. And it's from the central interpolation. If we have to interpolate the data that lies somewhere in the center. Now, today we will study the Stirling's interpolation formula, and it's nothing but the average of Gauss forward and Gauss backward formula. So, do you have any problem with Gauss forward and Gauss backward? किसी को कोई प्रॉब्लम थी वहाँ पे? So now Stirling's interpolation formula. It's the average of Gauss forward and Gauss backward formula. You can say the mean of Gauss forward and Gauss backward formula. Is this visible to you? Is this screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to write down the formula directly, or else you can draw the table and take the average. वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और directly भी याद कर सकते हैं. After that, we will solve the problem based on this formula. So, Stirling formula, I'm saying the average of Gauss forward in the Gauss backward formula. So it will be in this form: yp is y naught plus p by 2. एवरेज लिया है, तो जो गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड में एवरेजेस थे, द फर्स्ट डिफरेंसेस वो ये थे, बाय डेल वाई नॉट और डेल वाई वन, तो इन दोनों का एवरेज हो गया है इन द स्टिलिंग्स फॉर्मूला.
After that, the next term will be e square by 2 factorial. So del 2 by minus 1. Third term will be p square minus 1 by 3 factorial del 3 by minus 1 del 3 by minus 2 by 2 plus p square minus 1 square by 4 factorial del 4 y minus 2 and so on. So this is the Student's formula. Now I'm going to solve the problem based on the Student's formula. So suppose question is आवाज नहीं आ रही मैम। wait. आपकी आवाज नहीं। Connection is too poor. Am I audible? Yes, ma'am. Suppose problem is the values of f of t are given in the following table. In the interval 0.5 from t equals to 0 to t equals to 3. Where integral f of t is equals to 1 upon square root of 2 pi 0 to t e raised to the power minus t square by 3. तो हमें यहाँ पर जो डेटा दे रखा है, the data is given from 0 to 3 and the difference between the interval is 0.5. मतलब first data जो दे रखा है, it's a 0, then 0.5, then 1, 1.5, 2, 2.53 and उस सारी values पर इस इंटीग्रल की values evaluate होंगी. तो डेटा इस मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। Now am I audible?
or the voice is breaking. Please mute your mic. Mute your mic. What I'm saying, mute your mic. Balram. Am I audible or not? Am I audible? These are the values of t, which is at the interval of 0.5, 2.0, 2.5, 3.0. And the corresponding value of f of t represents this integral, and its value is 0.0000. We have taken the value of the f of t up to the 4 decimal places. It's given in the problem. Also you can find out. 4333, 0.4, 77, 0.494, and the last one is 0.499. This is the complete data which is given. And now am I audible? Yes, is this screen visible to you? Hello everyone. Yes, ma'am. So you have to estimate the value of f of 0.44 by Stirling's formula. Okay, so use this formula most probably when it come by names. Otherwise, go for Gauss forward or Gauss backward formula. Now you see that 0.44, it lies in the middle of the given data. कहाँ पे lie कर रहा है? यहाँ पर. Is that okay? Is that okay? So we can take the value of x naught is Yes, yes. Yes, ma'am. 433. मैं x naught क्या ले सकती हूँ यहाँ पे 0.433 because it's nearby 0.43. Now again draw the table as we have draw it in Gauss backward formula or the forward formula. तो सबसे पहले इसके corresponding मुझे p evaluate करना होगा and p is nothing but it's x minus x naught by h, and h here is 0.5, the difference between these 2 points. So h is 0.5, x naught is 0.4333, and
the value of x is given, so just find it out. This is x naught. This is x naught. So, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3. And the corresponding value is 0.0000, 0.191, 0.341, 0.4333, 0.477, 0.494, 0.499. Now the value of t is, t क्या होता है? x minus x naught by h. यहाँ पर x क्या है? It's t. So value of x naught is, this is corresponding to this is x naught, means this will be take at 0, and it's the first one is -2. जब हम यहाँ पर x naught हमने कितना लिया है? 1.5 सी -2 -1. Find out the differences. Del f of t, del 2 f of t, del 3 f of t, del 4 f of t, del 5 f of t, and del 6 f of t. It means the difference between these two, and it's equals to 0.191. So find out the first difference, second difference, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे वैल्यूएट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले किया था, द सेम वे वी हैव टू वैल्यूएट द डिफरेंसेस. So now the difference is 0.150, 0.092, and
0.044. What is the difference between 0.494 and 477? Find out the difference. And 0.499 and 494. It's 005. Now for the second difference, find out the difference between 150 and 191. It's 0.039. 150 and 191 का difference. Yes, नेगेटिव ma'am. में आएगा ना? 0.039. Minus 0.039. 0.039. Please check, यही आ रहा है? 4-1 आ रहा है मैम. 4-1 आएगा, 3-9 की जगह 4-1 4-1 आ रहा है मैम. अच्छा हाँ. 0.09. Yes, ma'am. 4-1 आएगा. So it's negative 58. 58. 5. Then the difference is again it will be negative 44 and 92. 48. 48. 0.048. 47. 27. So 0.027. last one is 0.015. 27. Now find out the third difference. 0.012. 48 and मैम 1-2 आएगा. मैम 1-2 आएगा 1-5 की जगह. Yes ma'am. 1-2. Okay. Now 58 and 41. It's negative of minus 0.1 17. 7. 7. 48 10 0.0 positive में आ जाएगा ये. And after that 48 and 21 0.021 and it's 15. 0.015. 5. अब ये वाला डिफरेंस आ गया. Now find out the fourth difference. 0.027. 0.027. Then 0.011. 0.011. Minus 0.06. 0.011 and minus 0.0006. 6. Find out its fifth difference and it's 16 हो जाएगा. Minus 0.016. One is 17. Minus 0.17. And the last difference is Minus 0.001. 1. तो मिडिल में यहाँ पर क्या लाई कर रहा है? यहाँ पर इसके मिडिल में हमारे पास 1 लाई कर रहा है. तो आई एम टेकिंग 1 एज माई ऑरिजिन. मैं यहाँ से इसी तरीके से लाइन ड्रॉ होती है. ओके. और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो स्टिलिंग्स में हमारा इफेक्टिवली क्या यूज होगा? द एवरेज. तो फर्स्ट टर्म में जो एवरेज आएगा वो इन दोनों डिफरेंसेस का एवरेज होगा. फिर ये वाली डिफरेंस आएगी. आफ्टर दैट एवरेज ऑफ दीज टू डिफरेंसेस, देन दिस वन एंड सो ऑन. जितने भी डिफरेंसेस हमारे यहाँ पर इवैल्यूएट हुए, तो यहाँ पर इफेक्टिवली ये सारे डिफरेंसेस यूज करे जाएंगे. ये वाले. सो दिस इज स्टिलिंग्स फॉर्मूला. अदरवाइज अगर हम सिर्फ अपवर्ड जाते हैं, देन दिस इज द बैकवर्ड फॉर्मूला एंड देन नेक्स्ट वन इज द
फॉरवर्ड फार्मूला मैंने अभी आपको इससे पहले फार्मूला बता दिया है. I have already written the formula. ये रहा. Substitute it in this formula and find out the solution. So p की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? We have taken evaluating 1 होगी ना? 0.44 के लिए evaluate कर रहे हैं. So first evaluate the value of p and then substitute it in this formula. So this is again the simple thing. The main problem is important point is how to draw the table and draw the lines. अगर आप ये formula याद नहीं कर सकते हैं तो draw the lines properly and take the averages of the differences that lies on the backward and the forward formula. Is that okay? Yes, ma'am. Any problem? You just need to substitute the value of the differences here. So first, जैसे यहाँ पर आ रहा है del y naught del y1. So these are the values of my del y naught and del y1. Then this one is for second difference, third difference, and so on. So अगर आप सारे differences evaluate यहाँ पर करेंगे, then you will get the best approximation and solve it up to the fourth or fifth. Is that okay? So this is Stirling's formula, and one more thing, use this one जब ये by name पूछा जाए, otherwise go for the backward or the forward formula. Now, any problem? No. Complete this problem, and in the next lecture we will start numerical integration, and in the numerical integration we will study three techniques for solving numerical techniques and three rules for integrating. First one is trapezoidal rule, then Simpson's 1/3 and Simpson's 1/3 rule. And after that, in this unit, numerical differentiation is one more topic. So we will start it in next lecture. And I have also shared problem sets in the Google Classroom. So try to solve the maximum number of problems. And if you feel any problem, so you can ask me. अभी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. किसी भी फॉर्मूले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, then you can ask me. और write down present in the chat box. Already सबने लिख दिया present पहले ही. Just enter in the classroom and write down the present. सबसे first काम आप लोगों का यही होता है. Yes, any problem? Is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you, ma'am. इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद मैं एक असाइनमेंट आपके साथ शेयर करूंगी और वो आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना होगा. ठीक है, तो उससे पहले जो प्रॉब्लम सेट मैंने दिया है उसको आप सॉल्व कर लो. उसमें कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी. Okay, ma'am.